Very good morning, my dear boys of class 12. Today, I am going to complete one topic, that is physiological factors determining strength. Questions कुछ इस ढंग से आते हैं. What are the physiological factors that influence strength, or physiological factors influencing or determining strength? तो कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन कौन फैक्टर्स है जो हम लोग को स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं? व्हिच फैक्टर्स आर, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस आवर स्ट्रेंथ? देयर आर 4 or 5 फैक्टर्स. लिसन इट वेरी केयरफुली. Strength is the ability to overcome resistance. I told you earlier, strength is the ability to overcome resistance. So what are the factors that determine strength? Obviously, number one, the size of the muscle. The size of the muscle. Bulky muscles, hefty muscles, muscular body obviously, definitely can produce much strength. The size of the muscles. Bigger the muscles, greater the production of strength. Bigger the muscles, larger the muscles, greater the production of strength. तो नंबर 1 पॉइंट होगा साइज ऑफ द मसल्स. ऑफकोर्स जो मसल मैन है, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उसका स्ट्रेंथ तुमसे कहीं गुना ज़्यादा होगा. वाई? इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द मसल्स, द मास ऑफ द मसल्स, एंड दोज मसल्स can produce much strength because the contraction is shortest and the expansion is the largest. So, size of the muscles determine strength. Number 1, recollect it, remember it very carefully. Size of the muscle, number 1 point. मसल का आकृति, आकार, जिसके पास ज़्यादा बड़ा मसल्स है उसका प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होता है. नंबर 1. नंबर 2, लीन बॉडी मास. What is lean body mass? Now, lean body mass is the weight of the body without fat, without the adipose tissues. Lean body mass. So, lean body mass is the total weight of the body without fat. Total body weight minus fat. Total body weight minus fat, जो weight होता है, जो mass होता है, that is lean body mass. Fatless body can produce much strength. Fatless body can produce much muscular strength. Fatless body is called the lean body mass. Individuals, the persons having more lean body mass can produce more strength. Fully muscular body, gymnasts. Suppose जिमनास्ट लोग के शरीर में थोड़ा सा भी फैट नहीं होता है, पूरा ही मसल्स है. कार्ब्स लेते हैं वो लोग, ज़्यादा प्रोटीन्स लेते हैं. तो मोर लीन बॉडी मास, दैट मीन्स मोर द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ. तो नंबर 2 पॉइंट हुआ लीन बॉडी मास. नंबर 1 पॉइंट साइज ऑफ द मसल. नंबर 2 लीन बॉडी मास. क्लियर? नंबर 3 फाइबर ऑफ द मसल्स. यू नो वेरी वेल दैट 2 types of fibers are seen in our muscles. Of course, the percentage of fiber determine strength. As I told you earlier in class 11th and in previous chapters also, we all have 2 types of fibers. White fiber, which is known as fast twitch fiber, and red fiber, which is known as slow twitch fiber. So fast twitch fibers are whitish in color, and they can work without the presence of oxygen but for short span of time, but that may work speedily as they come into shortest position and they go into largest expansion. Shortest contraction and largest expansion will be very quickly. So that's why the 100-meter sprinters, 100 meters hurdlers और शॉर्ट डिस्टेंस रेस जो करते हैं, दे हैव वाइट फाइबर मोर इन नंबर इन देयर बॉडी, बिकॉज
for 10, 11, 12, 13 seconds, they can work without the presence of oxygen by burning adenosine triphosphate and creatine phosphate, ATP and CP. So this is, and explosive strength को पैदा करता है. So the presence of the white fiber helps in producing explosive strength as the sprinters have. Now red fiber, they can work for the long span of time with the presence of oxygen, and they help us in producing strength, endurance. Both are the strength. One is explosive strength, another is strength, endurance. But white fiber एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं और रेड फाइबर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं. बोथ आर स्ट्रेंथ. सो द प्रेजेंस ऑफ द फाइबर ऑल्सो डिटरमाइंस द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ. दोज हु आर हैविंग वाइट फाइबर विल प्रोड्यूस एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ. दे आर द गुड स्प्रिंटर्स. स्पीड बर्स्ट वो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं और विंड स्प्रिंट खींचते हैं. एंड दोज हु आर द मैराथनर्स, 1500 meter runners, 20 kilometers walker, long distance runners, they are having red fiber in their body more in number. They can continue it for long span of time. Clear? Number 3 point, presence of the fiber, muscle fiber and nerve impulse. The presence of the nerve impulse, the speed of the nerve impulse. The speed of the nerve impulse also determines strength. All these things are given in my notes. Plus I am giving you the video lectures also. This should be listened very carefully. Nerve impulse, the speed of the nerve impulse, this also determines strength. Suppose a 100 meter runner फटाक से स्टार्ट ले लिया, his speed of nerve impulse बहुत अच्छा है. ब्रेन के साथ मसल्स का जो कोऑर्डिनेशंस होते हैं, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशंस इज वेरी गुड. You can take start very quickly. Now there are 4 points. Size of the muscle, number 1, lean body mass, number 2, muscle fibers, number 3, number 4, nerve impulse, speed of the nerve impulse. These are the 4 factors which determine strength. This topic is finished. Thank you very much.